Hello and a very warm good evening everyone. Today we are back with another exciting episode of Hype, also known as How You Got Placed, and today we have Kavaljit sir and Harshita Verma ma'am with us. Welcome ma'am, welcome sir. So without any further delay, let's get started with this episode. So first of all, I would request you both to give a brief introduction about yourself. Hello everyone, I'm Harshita Verma. Basically, I'm from Triple ID Gwalior, right? And I'm an open source contributor. I have contributed to Kubernetes. I'm an LFX mentee, and I'm a classical dancer as well. I like to play sports. Yeah, that's about me. And I like to explore new places, meet new people, make new friends. Yeah, fun. I really don't think I can beat that intro. Hey everyone, Sat Sri Akal. I am Kavaljit Singh. I am final year student from IPG MBA batch. Again, obviously from Triple ID Gwalior. I'm kind of oriented in between both engineering as well as product pros, management, finances, analysis, and everything. So I have a keen interest towards that. And yeah, fortunately I'll be joining Dell Technologies as a senior product analyst next summer. Wonderful sir. Okay, wonderful sir. Wonderful ma'am. So the next question, first of all, congratulations ma'am for the DanCon scholarship. Can you please share the experience of the KubeCon and Cloud Native Con and the key insights you gained there, and also what is the eligibility criteria for the scholarship? So thanks a lot. This Cloud Native Con is basically you can say Kubernetes conference which they conduct internationally to invite other people to share their knowledge, to find new solution for the cloud technologies basically. And I got this chance on the basis of my LFX mentorship which I've done in 2022, right? And basically in that conference, that was one of the best thing I have ever done in my life. So I have met there a lot of people which are from different countries, from different places, and like the communication which we had, that was great. I think the greatest thing, the network, you built a network, and that helps you to build, to understand yourself, to understand other things, other people, other virtues, like how they can work, how you can say you are working on a thing and how you can elaborate it, right? You get new insights on them when you attend some conference, and some amazing people, I would say these people are like wow. Cool. So yeah, and the eligibility criteria, so basically anyone can apply. Anyone, like a professional, a student, anyone can apply for that scholarship, but they will select on the basis of like what you have done for the community, right? So if you have done some great some great contribution for their community, like for Kubernetes, for like CNCF projects, right? So if you have done something good, basically people do that major change or major contribution in their GSOC projects or in their LFX projects. So basically those people have more chances to get selected for the scholarship, right? But anyone can apply, and yeah, that's about the scholarship and the conference. So you were a software developer at Equiseat Wealth and WonderMaths.com. So according to you, what is the role of these internships in getting placements? Yeah, okay, so both of these places that you mentioned, they are like early stage startups who are trying to build their MVPs, what's called as the minimum viable product, the thing जो कि अपने customers को सबसे पहले they are trying to offer, so that they can actually make a place among the industry, among other competitors. I'm of an opinion that everyone जो भी engineering pursue करे, specifically in computer science or IT related domains, they should spend like, I don't know, minimum 6 months or a year working in fast-paced, dynamic environments such as these startups I just mentioned. And there are other wonderful startups as well, जो कि अलग-अलग domains like fintech is in boom today. You have edtech, you definitely have startups जो कि completely AI based है. And of course, blockchain is also coming up these days, and cloud native technologies are there. So working in such kind of industrial settings, आपको दो benefits I think जरूर मिलते हैं. First is right from the beginning, you are not just
getting individual tasks या individual problem solving या individual issues जो आप solve करोगे will actually work on core features for that product जो कि you have to build from ground to the very thing that client will actually use, the customer base will actually use. So you get an overall picture of how the product development works, what actually goes into making a product sustainable, what actually goes into the core engineering of it, so that 5 लोगों से use करे, that's a different thing. 1 million people are using it, that's a different thing. Totally different thing, I would say. Like जो चीज़ कमल ने अभी मेंशन करी, and I think that is the best thing. When you develop something which can be useful for a million of people, or a billion of people, or even thousands of people, then you will feel great, and you will get an idea like how things are actually working. You are just studying in the class, like this is this, and how it works, right? But when you actually got into that, अब ये प्रॉब्लम आ गई, अब इसको कैसे सॉल्व करूँ, है ना? जब आप वो खुद से बिल्डअप करोगे ना, तब आपका एक माइंड डेवलपमेंट होगा, राइट? वो चीज़ जो आप सीखते हो, राइट? That is best thing. Exactly. So, in nutshell, both of the places जहाँ पे मैंने intern किया था, that was I think in my first 2 or 3 years, second or third year. And again, as you know, that was the time COVID pandemic was going on. So it was, the other thing is time utilization. Engineers हम अपने आप को कहते हैं, but we tend to get lethargic. Specifically अगर हम bounded हैं, we cannot move outside in a pandemic situation. So yeah, I think wonderful experience थे दोनों जगह. I definitely, even though now I am ending up being in a role जिसका product orientation थोड़ा ज़्यादा है, it's more towards data and management perspectives, लेकिन still I believe even for graduates who are trying to go into product fields, जो कि even though fresh management students हैं, they should definitely spend a good amount of time doing hands-on coding, doing the actual development work. It actually gives you deep insights की one of the things जो कि आजकल even in big organizations there is a gap, because even though अगर आप product managers बनते हो and you work in on the product side and client side of things, you definitely have to deal with the engineering team, right? At the end of the day, आप एक IT firm में, technology firm में, or maybe in a SaaS product if you are working, so you have to deal with the engineers, you obviously have to deal with the team, technical members, IT professionals जो कि काम कर रहे हैं. So today, most of the people जो managerial positions पर है, like product managers या engineering managers, they sort of either are fresh management graduates जिनको कोई engineering background नहीं है, or maybe they are those people who have not really taken engineering courses. So for those people it becomes a little bit difficult कि वो synchronize कर सके तो core and hardcore engineers हैं. So I think because it's a plugin definitely, but because I pick MBA Balcil from our institute, so I think it's a relative advantage that students from our institute can get, because उनके पास core engineering skills भी है, and if they want to take, and they can definitely choose to go into STE roles, and most of us, a lot of us actually go for that as well. But even if still अगर आप you want to orient your career towards a management role, I think that's still it's a wonderful option, and it gives you an edge over existing जो भी other competitors है या other candidates हैं in any organization. So that was a golden advice. So ma'am, my next question is to you. You have been an LFX mentee at CNCF Kubernetes and Microsoft Engage mentee. So firstly, how did you get through them, and what highlights would you like to share to with audience about the projects you make and the impacts that they had on the placements? First of all, I'll start with projects which I have done. So as a LFX mentee, I work for CNCF Kubernetes, and in Kubernetes, like, my project was mostly related to the contributics department, the department which relates to, which works with the contributors, like contributor experience, to enhance contributor experience. Let's say you are a contributor, okay, you are a fresher, and you know nothing about CNCF, about open source, about Kubernetes, right? Many of us don't know. Even when I have started, I know nothing. I have started in my 3rd year, and at that time I know nothing about, I just know that there is something open source and I want to contribute to.
Okay, there is something GSOC. Like I was fascinated with GSOC at that time for the when I want to start. So GSOC is like that much big thing for me. Like I can't get, but I just want to know how it works and what is it. I don't just want to give it a try. Basically, I'm trying to be safe. So when you go into the platform, right, there are a lot of projects. Kubernetes, Kubevela, and many. Thanos, one of Prem sir is the maintainer of the Thanos. Okay, so there are many projects. ठीक है, तो आप कैसे सेलेक्ट करोगे कि यार कौन सा प्रोजेक्ट है और मैं कहाँ से शुरू करूँ? क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट है ना वो इतना वास्ट है, आपको ये समझ नहीं आएगा कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, ख़त्म कहाँ करूँ. यू कैन जस्ट सर्च एंड यू विल ओके, यहाँ आपने एक क्लिक किया, आप उस क्लिक से दूसरे पेज पे पहुँचे एंड देन यू सी समथिंग, कुछ समझ नहीं आया, फिर क्लिक किया, फिर घूम फिर के उसी पेज पे वापस आ गए. मेरे साथ लिटरली यही हुआ था. जब मैंने फर्स्ट टाइम कुछ भी खोल के देखा मुझे कुछ समझ नहीं आया था. True be true. I have started with ASF's winter projects, right? You have heard. So winter project में मैंने स्टार्ट किया. पहले मैंने ट्राई किया, मुझे कुछ समझ नहीं आया. ठीक. फिर मैंने ट्राई किया अंडर प्रेम सर's गाइडेंस कि ही वॉज द मेंटेनर ऑफ दैट प्रोजेक्ट. तो उन्होंने कहा था कि आई विल सपोर्ट. सो अंडर ASF's winter project I have started अंडरस्टैंडिंग Thanos. ओके, आई हैव स्टार्टेड विथ Thanos. सो Thanos में भी उन्होंने पहले थोड़ा बहुत गाइडेंस दिया कैसे क्या चीज़ें वर्क करती हैं. ओपन सोर्स मुझे एक्चुअली तब समझ में आया थोड़ा बहुत, एंड रेस्ट ऑफ फिर जब उन्होंने समझाया मुझे कैसे चीज़ें एक्चुअली में वर्क कर रही है ना, तो दैट वाज जस्ट अ वाव टू मी. क्योंकि जब आप चीज़ें पढ़ते हो द सेम थिंग विच आई सेड अर्लियर कि आप चीज़ें पढ़ रहे हो और उन्हें अप्लाई करते हुए देख रहे हो, एंड यू आर छोटे छोटे बिट्स दिख रहे हैं आपको, चंक्स दिख रहे हैं कैसे बन रहे हैं, कैसे आप डेटा मैनेज कर रहे हो, कैसे हाई लेवल पे एक्चुअल में चीज़ें कैसे हो रही हैं. जब आपको पता चलता है एंड यू आर अ पार्ट ऑफ इट, इट फील्स ग्रेट. लिटरली इट फील्स ग्रेट. और जब मैंने वो सब पढ़ा मुझे एक्चुअल में इंटरेस्ट आया, मुझे बहुत अच्छा लगा. सो आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लोर. कुछ समय बाद सर वॉज नॉट एबल टू ही वॉज गाइडिंग इट. मुझे और लगा कि मुझे और जानना है. सो आई स्टार्टेड माई सेल्फ वॉट इज़, एंड थ्रू दैट आई हैव गॉट अ थिंग कैटाकोडा. नई चीज़ मिली मुझे उसमें. मैंने बहुत पढ़ा 1-2 महीने में इसी में लगी रही. थोड़ा बहुत समझ में आता था, कभी नहीं आता था, फिर मैं सर्च करती थी, फिर पढ़ती थी. मतलब 2 महीने दैट वाज द टाइम ऑफ कोविड, राइट. तो कोविड में क्लासेस तो कोई अटेंड कर नहीं रहा था. सो आई वाज डूइंग जस्ट दैट थिंग. ठीक है, मैं अपने इंटरेस्ट को कुछ ना कुछ घर पे बैठे क्या करूँ. सो बस मुझे अच्छा लग रहा था तो मैं कर रही थी. सो मैं देखा, फिर आगे और देखा, फिर चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगी. फिर मुझे एक नई चीज़ मिली कैटाकोडा. सो वहाँ पे मुझे कुछ कमियाँ लगी उसमें, टू बी ट्रू, कि ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसमें कुछ गलती है. सो आई जस्ट सजेस्टेड देम कि ये प्रॉब्लम है या इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है कुछ. सो फॉर दैट फिर मुझे कैटाकोडा क्या है, कैसे है, सिनेरियोज होते हैं उसमें कुछ, वो मुझे समझ में आया. ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंट्रीब्यूशंस देन LFX का पोर्टल था, तो सर ने कहा कि यू कैन फिल दैट. सो मैंने जब वहाँ फिल किया मुझे बिल्कुल वो नहीं था कि मेरा सिलेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल आइडिया नहीं था मुझे. टू बी ट्रू, आई वॉज जस्ट अ बिगनर. आई हैव स्टार्टेड जस्ट 2 months ago, ओके, इन जनवरी, एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर GSOC. LFX कई लाइन में भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था क्या होता है. सो जब आप व्हेन यू स्टार्ट यू गॉट न्यू थिंग्स, राइट. सो क्यों कैटाकोडा इतनी नई चीज़ है, आज भी मैं लोगों से बोलती हूँ उनको नहीं पता, राइट. उस समय भी वो बहुत नई चीज़ थी, सिनेरियोज थे. सो मेरे को अच्छा लगा, मैंने किया कंट्रीब्यूट उसमें, एंड आई गॉट सिलेक्टेड. एंड बाय लक और यू कैन से थानोस में भी मैंने अप्लाई किया था और क्यूबरनेटीज में भी अप्लाई किया था. तो थानोस वालों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, एंड आई वॉज हर्टेड लिटिल बिट कि थानोस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया. बट देन क्यूबरनेटीज सिलेक्टेड मी फॉर क्रिएटिंग देयर Katacoda scenarios. So that was the Katacoda journey, and my work was to create scenarios for the new people. Like you were there, and how can you contribute? How can you start to contribute? You can understand using that scenario, using that live platform that will teach you how to you can develop that complete code on your laptop, and how you can start contributing, from where you can get the things, from where you can understand. It will give you a hands-on workshop kind of thing, right? So that was my work, and I had did by mentioning, because I have a lot of problem in finding the solutions, in finding how to contribute. That was the main question for many of us, for you, for new generation as well, right? So it will help them as well. So yeah, that scenario even today helping a lot of millions of people it helped, and it's helping more and more people.
सो दैट थिंग ही वॉज सेइंग ना कि जब आप कुछ काम करो और वो लोगों के काम आए, एक्चुअल में काम आए, सो बहुत खुशी होती है अंदर से, बहुत अच्छा लगता है. एंड मे बी दैट वॉज द रीज़न फॉर गोइंग टू माई फॉर गेटिंग द स्कॉलरशिप विच आई गॉट, cause they like my work maybe. Okay, and the second thing which I've done is Microsoft Engage, right? So Microsoft Engage is a program which is run by Microsoft, so for their like internship and like for FT purposes. Okay, so उसके 2 टेस्ट हुए थे आई थिंक हमारे स्टार्टिंग में. फर्स्ट वन वॉज ऑब्जेक्टिव MCQ DSC बेस्ड टेस्ट एंड सेकेंड वन वॉज सब्जेक्टिव टेस्ट समथिंग. 2 क्वेश्चंस वर देयर, उनके क्वेश्चन के आंसर थे एंड इट वॉज डन. And after that you will get selected and you will get a mentor and a project. You have to complete a project in 1 month. Okay, so they give you a problem statement, you have to develop that project and their working condition and send them, right? So that was the project. There was a society security kind of project which I have developed. So yeah, that was good project. Basically that was the main highlight of my resume all the time because I worked with Microsoft and that my, you can say, the best thing for you, for anyone, the advice which I want to give, जब तक आप खुद से उस काम को फील करके नहीं करोगे तब तक उसका आई डोंट थिंक सो कोई मतलब नहीं. आप जब उस काम को फील करो ना कि आपने जो किया है वो क्या काम कर रहा है, उससे क्या हो रहा है, क्योंकि आप उसमें फिर डेवलपमेंट कर पाओगे, उसको एनहांस कर पाओगे, अपनी गलतियाँ खुद ढूंढ लोगे कि यार ये चीज़ गड़बड़ है, आई कैन इम्प्रूव इट, है ना. दूसरे के काम को देख के नहीं कर पाओगे, राइट. सो कभी भी फॉर यू एंड फॉर ऑडियंस एज वेल आई वांट टू गिव दिस एडवाइस कि अपने काम को पहले खुद से अच्छे से समझो. लोग बात क्या करते हैं, लाइक GSOC के LFX के नाम पे कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करना है, दे डू जस्ट रैंडम कंट्रीब्यूशंस. ऐसा नहीं करना है. पहले कोई भी प्रोजेक्ट है आप उसको समझिए कि उसमें चल क्या रहा है, एक्चुअल वो प्रोजेक्ट क्या है एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव इट. समटाइम्स यू गेट बेटर ऑप्शंस than the pull request or then the request is there were. So you can work on yourself and find new questions or new improvements. और अगर आप कुछ नया सजेस्ट करते हैं definitely they will consider you. It is a very big achievement and yes. So पहले प्रोजेक्ट समझो फिर कंट्रीब्यूट करो. ओके, सो हाँ, और लास्ट क्वेश्चन was like what was the impact on my resume and on my placement. So yes, these things plays a very important role like in my resume for the Microsoft one and the LFX one as well, because these are international level things and everyone like LFX is very known thing, right? CNCF is very known project for everyone in the industry. So yeah, these things helps you really. And moreover is the thing like you build a communication, you develop skills, mostly communication skills, personality skills and many other skills you will develop with these. Okay, that will help you basically, right? Not these projects, not these things. The skills will help you to get placed. Okay? So definitely your viewers will find this helpful. So my next question is to you, sir. You secured 7th position in TRIS 2018 IIT Delhi. So our viewers would like to know that how to approach the competition and what learnings did you took from it as a beginner in this field. Okay, yeah, so TRIST is actually an annual techno-cultural event that IIT Delhi conducts. I think they started doing it in, I don't know, 2017, 2018, something like that. Interestingly, it's before actually I joined college. I joined IIIT college in 2019. So it was actually some of my school friends and people I knew. Just 4 of us actually, we just formed a team and we sort of applied there. The main premise of the entire thing that we were part of was to give a sort of a proposal for a project that you would like to implement that has like there were 2 key categories. One was environment sustainability, the other one was extensive use of upcoming technology such as AI. I mean, 6 years back we didn't saw that kind of boom for AI that जो आजकल है. So I mean, it was just a random application you put in IIT Delhi. At that time we were preparing for JEE and everything, and we just put in a sort of a proposal for our project. It got selected and then we went to IIT Delhi. I mean, it's like a 3 or 4 day event. We were just there for like maybe 3-4 hours, that's it. We presented it, we sort of enjoyed the campus there. It's a big campus, IIT Delhi.
and then we got back essentially, because I still remember we had not yet given the JEE advanced exam, and then a couple of months down the line we got to know that the certificates, they actually mailed us physically, they sent the certificates to our addresses. So yeah, that was traced essentially. And I followed Trist and these kind of competitions lately, so they are actually quite good. Generally for IT professionals such as us, हम hackathons या conferences पर ज़्यादा focus करते हैं, which is again fine. But competitions such as these, which are like generalized conferences, maybe paper presentation conferences. In fact, our institute also organizes a lot. So yeah, these actually can give you. It may not have a direct impact on your placements, और उसमें आपको कुछ मे बी डायरेक्टली असिस्टेंस नहीं मिलेगा until it's very role specific. आप research oriented role पर ही जा रहे हो, and you have like couple of or maybe more than that publications to support you, and that aids your profile. But other than that, it gives you, as Ashita said, it gives you exposure. You get to connect with a lot of people. Most important thing is you learn how to handle criticism for the idea that you have posted, or for the for code that you have written. You also learn that. So yeah, I think Trist for me was that, getting to know more people who are working in similar domains, and we got like 7 positions there, so that was fun. Ma'am, we are glad to hear that you bagged an offer from Meesho. Congratulations for that. And we would like to know what were the steps that made you bag this offer, and especially during the interview process, and what were the previous experiences of yours. Thank you for your congrats. And basically, my offer was related to BA, business analyst, and I have never prepared for that position. First of all, 2 weeks. Cool. So that was like SQL based, right? And I have studied SQL in my second or third semester. So I just forgot like what they are doing, like what questions are these. They have sent it like for practice questions, something like that. I have seen their videos. So then I was like, let's give it a try. Okay, 2 weeks. So I tried and I got selected for the interviews. And in interview, my interview was quite good, and she was like quite helping me. And I said like I have done things in like cloud native technologies, CNCF related. I have worked on. I have not prepared like these much things for SQL things. But she interviewed me like very very generous way, and I answered all the questions what she asked. And the major thing which played role to get selected in interviews, according to my experience, I can say the communication is the best. Communication should be best. Okay, you should be able to tell the interviewer what are you feeling, what is your methodology to reach the answer. Okay, क्वेश्चन कैसा भी हो, टफ भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है, बट आपको एक्सप्लेन करना अच्छे से आना चाहिए कि आपके मन में क्या चल रहा है इस क्वेश्चन को देख के, राइट? कोडिंग क्वेश्चन हो, वेदर DSA और एनीथिंग, कम्युनिकेशन शुड बी ग्रेट. आप जो सोच रहे हो आपको ढंग से समझाना आना चाहिए सामने वाले को, जो इंटरव्यूअर है, कि आप क्या फील कर रहे हो, क्या आपके दिमाग में आ रहा है, क्या आप स्टेप्स फॉलो करोगे टू रीच द आंसर. आप डेफिनेटली गड़बड़ करोगे फर्स्ट टाइम पे. अगर अच्छा क्वेश्चन है, इंटरव्यूअर अच्छा है, फर्स्ट टाइम में आपको कभी आंसर मिलेगा ही नहीं, टू बी ट्रू. लेकिन जब आप अपना मतलब एक व्यू रखोगे ना उनके सामने कि पहले मैं ये करूँगी या मैं ये करूँगा, राइट? सो जैसे जैसे आप स्टेप्स करोगे, कहीं आप गड़बड़ कर रहे होगे, कुछ एक स्टेप होगा जहाँ पे आप गड़बड़ कर रहे होगे. He or she will help you definitely at that point, and that will turn you okay to the true way. In that way, when you communicate, when you share your experience or share your view, that is the best interview for me, right? I have interviewed with Microsoft, with Google as well, and with Meesho as well. So yeah, जो चीज़ मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी कि आपको समझाना अच्छे से आना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हो. सामने वाला बिल्कुल आपकी हेल्प करेगा, है ना? सो बट ऐसा रटाया आंसर वो भी नहीं चाहते, और ना आप देने की कोशिश करना, राइट? अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो उनको अच्छे से बेस्ट पॉसिबल वे में आप उन्हें बताओ. एंड मीशो में वही चीज़ मेरी हेल्प करी. मुझे बहुत सी चीज़ें थी जो नहीं आती थी. शी हेल्प मी, ओके, इन द इंटरव्यू शी हेल्प मी टू गेट थ्रू द आंसर.
but yeah, in the end, like I was able to find the answer on the basis of DSA which I have done. The question was based on SQL, but I've done DSA. You know, we all do. So yes, I was able to get the answer on the basis of my DSA knowledge. So yeah, शेयर. सो लोग आपकी हेल्प करेंगे, बट आपको अपना व्यू, कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट, राइट? यू वांट टू ऐड समथिंग इन दिस पर्टिकुलर थिंग? Yeah, I think I agree with what Harshita said. Communication does play an important role. इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेक्निकली प्रिपेयर ही ना करें. That preparation has to be on point, of course, but even if you are like टेक्निकली साउंड, 4-star coder, let's say, and आप अपना solution प्रॉपर वे में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है, एंड इवन इफ यू आर एबल टू राइट ब्रिलियंट कोड एज एक्सपेक्टेड, सॉल्यूशन complexity is fine and everything. If you don't communicate well with the interviewer, he or she will say, okay, this person is a good worker, they can solve problem, they can write code, they cannot tackle issues which are unknown, जो कि at the face value आपको visible नहीं है, but as you work on a particular problem or internal issues that arises, so that is something that companies and any organization, any group that is dealing with some challenging thing, they would like their team or their employees to have that. So yeah. So you've secured an offer of senior product analyst at Dell, and heartiest congratulations for that. Also, you were product engineer intern at whitecarrot.io, so which is a unique opportunity which is different from the conventional development roles. So please elaborate on the skill set which is required and in what way one should prepare for it. Okay, going chronologically, I first started working as an intern at Whitecarrot. It's again, as I talked, it's one of early stage startups. It's based out of Dubai, UAE. So at the end of my, I think, 4th year, I started working there. So product engineering, my profile was again, as I told, a mixture of hands-on coding, because you're working on a dynamic environment. हमारे small compact teams होते हैं आजकल इन startups, so you don't generally get to do आपका dedicated काम, so you have to cross-functional work. So even if my role was coding heavy, I was working as a developer, but I was also aligned with the product side of things, understanding what would be the consumer journey, client side journey. I also seldomly interacted with the actual customers जिनको हम serve कर रहे थे. So in that sense, I'll call it a unique role. When I have not worked that way in a couple of organizations that I worked previously. So and I really enjoyed working there, as I said, because you're not only writing code, which is something that always coders code compile successfully, it gives you happiness. But at the same time, when you actually see people using your product, actually seeing people use the feature जिसके पीछे आपने maybe work for a couple of weeks, and they like it, the expectations are met, or sometimes you also overachieve. So that is something that's really delightful. Talking about Dell, so Dell was again an on-campus opportunity. Dell had been to our campus back in September or October, I think. There were like 3 or 4 rounds, maybe 5 rounds if you include the final hiring manager or HR round, and all of them took place in one day itself. So after the preliminary resume screening that got over, some students, maybe like 10 or 15 students, were shortlisted. You were introduced to what would be the structure of the interviews, किस टाइप से आपकी through, because as I said, it wasn't just one single day. So पूरे दिन में आपके interviews किस टाइप के कैसे होंगे. There were like a couple of technical interview rounds, जिस पे basics आपके fundamentals of computer science, आपके previous experiences, they were majorly focused on that. We had, because it was again a product role, so we had a group discussion round. A panel of managers and experienced people were there, and we had to present our views on the cases that they provided to us. And then
I think the most challenging one out of it at the end of it was an engineering manager round. So I mean, they had different panels, but I interviewed with the person who is like the engineering team lead in India, in Bangalore. So I would consider that as a, that was probably the most challenging round. Uh, what separate skills you would require? I say again, it's completely dependent on the profile that you are targeting. Uh, आजकल in IT there are multiple profiles. You have SD, software development engineers, or software engineers which are like dedicated engineering, core engineering fields. You have आपके पास कुछ profiles are like testers, QA automation testers. Then you have people like product analysts, data analysts, product managers, engineering managers who are sort of working in between the developers or the engineers who are writing code, and then you are also working with the customers, the clients who are actually using your product. You're sort of also crunched up between the top higher management who keep on poking you why the deadlines are not met, and why costs are overflowing, why it's not as per expectation. So variety of skills are required for all of these roles. But as I said before also, even if you are moving towards a management oriented role, hardcore customer side, sales side, which is like completely different, you should still have some experience on writing code and so on, because past 2019 जो next one and a half decade है till 2020 2035 maybe 2040 तक, it's entirely available for IT professionals. And धीरे धीरे all other jobs that are like redundant जिनको automate किया जा सकता है, that involve like repeated manual labor involved, धीरे धीरे they'll start getting replaced either by bots, either by autonomous robots, or either by people who can train those autonomous robots. So it's important कि आप code से, आप software से, in any capacity, आप you are connected with that, you're connected with the engineering mindset, the problem solving mindset. So, yeah, I think those are some crucial skills you require. And of course, I'm just repeating it. Focus on your communication, because that's the key. Really important. आपकी hardcore जो skills है, if you're going for SD, then of course आपकी algorithmic skills you need to work on that. अगर आप developer role पर जा रहे हैं, then you definitely have to have like hands-on developer experience on web technologies or Android native, whatever you're working on. आप data science role पे है, then you sort of have to tackle between AI knowledge, working on machine learning, and then also sort of understanding how the business people will actually take the results जो कि आप obtain करेंगे out of the model. And अगर आप hardcore, if you're moving towards client side of things, managerial side of things, then you need to focus more on how to maintain long-term relations with your clients, how to ensure कि जो आपके बेस्ट परफॉर्मिंग इंजीनियरिंग टीम मेंबर्स है वो आपको छोड़ के नहीं जा रहे हैं, राइट? Attrition is a big problem. So those kind of challenges you solve, and you keep on learning basically as you work, as you gain experience. Yeah, I think you get better. That was a great advice. So one last common question to both of you. What one thing do you feel is necessary for a student to balance his academics and skills for personality development as well as good placement? Both. Balancing out academics and coding and co-curricular. I am not of a very popular opinion, but I said अगर आप तीनों में अच्छा कर सकते हो, so just go for it. You should aim for highest possible academic score, right? You should aim for highest possible placement not just in your institute, but in your among the friend groups also, or the different colleges में, and you should aim for highest possible exposure in all co-curricular activities. The balance आपको क्या set करना है, that is again an individual preference. किसी को some people gravitate towards sports so much कि they don't like to go to class. Class आने किसी को पसंद but नहीं मुझे कुछ पसंद थी. So they don't feel that
enthusiasm while attending lectures, or maybe going in a debate competition, let's say, or participating in a fest. I've had friends like that, I've had seniors like that, I'm seeing some juniors like that as well. So it's again an individual preference. Mainly again, for me it was never key. I'll ignore academics, or I'll maybe put it to a lower end. Try to manage your time well. That's all I can say. प्रायोरिटी आप किसको देना चाह रहे हो, दैट्स अगेन ऑन योर पर्सनल गोल्स. अगर आप श्योर हो कि यू वांट टू डोंट रियली केयर अबाउट योर स्कोर, यू डोंट रियली केयर अबाउट एंजॉइंग इन द फेस्ट, और मे बी पार्टिसिपेटिंग इन badminton competitions and like in sports basically. Exactly. You want to do competitive coding and maybe represent your state or your country in international platforms such as ICPC or something. That's brilliant. But then the result should show that, right? ऐसा ना हो कि आप पूरे दिन कोड करते रहे, लेकिन at the end of it ना आपका स्कोर अच्छा ना प्लेसमेंट. So that sucks. So try to manage among all of these three fields, and I'm sure at the end of it जो भी आप लास्ट डे ऑफ योर कॉलेज अगर आप अपने आप को आईने में देखोगे, you'll never feel regret. अगर आपको लगता है, so then I've never met someone जिसको अपनी कॉलेज लाइफ में बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, right? So whatever decision they take, I think it will be good for them, but just try to moderately balance among everything. Yes, like I'm totally agreed with Kamalji. So basically, I'm a kind of person who likes to do everything, who wants to try everything, literally. When I was here in first year, so I want to do dance, I want to be in a drama, and I want good grades as well. Okay, I want good placement. Okay, so I'm a kind of person who wants everything. Cool. But it's not possible, right? It's not possible. You can't be good in everything, right? But देखो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप क्या चाहते हो, राइट? अपनी लाइफ से अपने गोल्स जो आपने सेट किए हैं, एज कमलजीत सेड कि सबके गोल्स डिफरेंट होते हैं, सबके अपने फ्यूचर का एक व्यू होता है, वो सबका डिफरेंट होता है. ओके, सो जो मेरा व्यू था कि मुझे सब कुछ ट्राई करना था. I want to try everything. I want to live my life as best as I can, which I did. And I'm very happy with my college life. Whatever I did. Okay, so yes, I had good grade, not bad. So अगर सब कुछ बैलेंस करना है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है. ओके, जैसे कि आप स्पोर्ट्स में हो तो इन फर्स्ट ईयर लाइक देयर वाज ऊर्जा, राइट? ऊर्जा. सो यस, स्पोर्ट्स मैंने पूरा कॉलेज में आके सीखा है, फ्रॉम बैडमिंटन, स्क्वॉश, टीटी और एनीथिंग लाइक XYZ. I have learned, like at that time there are 14 sports. 14, yes, in my first year. So yeah, I tried everything. I have learned cricket. I played cricket first time in college life. And when there was the ground, like the final match which was happening, and on my first ball I put a sixer, and I was very happy. It was a memorable moment for me till now. So yes, I want a good life. Okay. इट्स नॉट अबाउट कि बहुत अच्छा स्कोर करना है, मेरे लिए ऐसा कभी नहीं रहा. क्लासेस जैसे इन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग अटेंड करते हैं, बहुत सारे लोग अटेंड नहीं भी करते हैं. ओके, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, बट होता है यार 75% अटेंड करनी ही पड़ेगी. वो लोग मन मार के भी करते हैं, ठीक है, हमने भी करी है. बहुत सी क्लासेस ऐसी थी जिसमें मेरा मन नहीं लगता था. उस समय क्या करो आप, लाइक टू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ दैट, आइदर सो जाओ बाकी जाके रूम पे अपना काम करो. सेकेंड पॉइंट इज़ कि वहाँ पे मान लो टीचर पढ़ा रहे हो, ओके, थोड़ा बहुत सुनते रहो, बाकी अपना काम करते रहो. मे बी आप डेवलपमेंट कर सकते हो, कोडिंग के क्वेश्चंस ले आओ, वहाँ बैठ के सॉल्व करो. किसने मना किया? आराम से बैठो, शांति से अपना दिमाग अपनी पढ़ाई में लगाओ. लेकिन ज़्यादातर लोग जो मैंने देखे हैं, मेरा मतलब यही था कि मैं कभी टाइम वेस्ट नहीं करूँ. मेरे को खेलना पसंद है, मुझे बहुत पसंद है. आई लव स्पोर्ट्स, लिटरली आई लव स्पोर्ट्स. आई लव बैडमिंटन, स्क्वॉश, टीटी, मुझे बहुत पसंद है. तो मैंने खेला बहुत, फर्स्ट ईयर में भी खेला. अभी भी अगर मुझे मौका मिलता है तो डेफिनेटली मैं बहुत पसंद करती हूँ, अभी भी खेलती हूँ. मुझे बहुत अच्छा भी लगता है अपने गेम को बेटर बनाना, राइट? व्हेन यू प्ले ना, तो कभी कभी कुछ चीज़ें आपको खुशी देती है, आप कुछ करते हो तो, राइट? आपके साथ भी होगा डेफिनेटली कि कुछ चीज़ें आपको लाइक लिटरली अगर आप बीमार भी होगा ना तो ठीक हो जाओगे. तो मेरे लिए ऐसे हैं स्पोर्ट्स, ठीक है. तो मुझे बहुत पसंद है, डांस बहुत पसंद है मुझे.
तो मैंने कहा ना फर्स्ट ईयर में सब कुछ ट्राई करना चाहती थी। मैंने डांस में भी किया, आई एम इन बीट हॉपर्स, वी हैव डांस सो मच इन सो मैनी प्लेसेस एंड आई लव दैट। वो जर्नी लाइक व्हेन मैं ये कहूँगी कि लोगों से जब वो आते हैं या आप लोग भी हो, सो ट्राई ज़रूर करो, क्या पता आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगे, राइट। माई मोटिव वॉज कि मेरे को वो ढूंढना था कि मुझे किस में अच्छा लगता है, एंड आई थिंक थ्रू माई कॉलेज जर्नी आई फाउंड दैट मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे कौन सी चीज़ पसंद है, कौन सी नहीं। सो येस, इन चीज़ों में मुझे कॉलेज में बहुत हेल्प करी। लाइक बीट हॉपर्स वन ऑफ द बेस्ट part of my college life, best memories I have made in beat hoppers, in Manchtantra as well. We have gone to IIT Indore in my first year of college. So yeah, that was the great experience. Like केवल आप जब किसी भी क्लब में या किसी भी क्लब के या किसी भी मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में होते हो, आइदर स्पोर्ट्स, either डांस और ड्रामा और लाइक इन उत्थान एज वेल और इन एनी अदर क्लब, सो उसमें आप बहुत सी चीज़ें सीखते हो। केवल आप अपना काम नहीं करते हो, कई बार आप लोगों का भी संभालते हो, दूसरों का भी संभालते हो। मल्टीपर्पज़ लाइक आपके अंदर वो चीज़ हो जाती है कि आप सब कुछ हैंडल करना सीख जाते हो, और वो जो स्किल्स हैं वो आपको आगे बहुत हेल्प करेंगी रियली इन योर लाइफ एज वेल। टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट अगर आपने अपनी कॉलेज लाइफ में सीख लिया ना, उससे बड़ी स्किल कोई और हो नहीं सकती। टाइम मैनेजमेंट सीख लो, और वो इन सब चीज़ों को आप जितना एक्स्ट्रा करोगे ना, जितना ज़्यादा काम अपने ऊपर लेंगे, मतलब जितना लोड बढ़ाओगे, उतना ज़्यादा आप सीखते जाओगे। मैं पहले बहुत डरती थी, लेकिन फर्स्ट ईयर में मैं बता रही हूँ मैंने क्या नहीं किया मुझे नहीं याद मैंने सब कुछ किया है। और इन द एंड ग्रेड्स में भी लाइक क्लासेस जाने का भी टेंशन रहता, मैं क्लासेस में जाकर सो जाऊँ। लाइक कुछ क्लासेस मुझे पसंद थी, तो साइनोराज मैम की मुझे बहुत पसंद थी तो उनकी क्लासेस में सुनती थी, और जो नहीं पसंद थी उसमें अपना काम करती थी, या जाके थोड़ा बहुत या रेस्ट कर लेते थे, ठीक है। लेकिन करो, मेरे हिसाब से सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा बैलेंस करके चलो। किसी चीज़ को इतना मत छोड़ दो कि आगे रिग्रेट हो उसको लेके। लाइक बहुत से लोग होते हैं एकेडमिक्स बिल्कुल छोड़ देते हैं, एंड देन उनको बाद में रियलाइज़ होता है अरे यार उस समय ऐसा नहीं करना। वो अरे यार वाला जो रिग्रेट है ना, वो बहुत बुरा होता है, वो नहीं आना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सब मैनेज करते रहो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी देखते रहो। लाइक तुम्हें फील हो जाएगा यार इस समय ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के समय पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली उस समय तुम खेलने नहीं जाओगे या बाहर फेस्ट में नहीं जाओगे, है ना, कहीं भी नहीं जाओगे। तो जैसे आप फिर आपको खुद समझ में आने लगेगा यार इस समय इंपॉर्टेंट है, इस समय इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ समय, कुछ थोड़ी देर अपने लिए रोज निकालो, आइदर प्ले, आइदर वट एवर यू वॉन्ट टू डू। यार लिखना है, लिखो बैठ के। बहुत से लोग होते हैं उनको राइटिंग पसंद, लिखो। अपनी कॉलेज लाइफ सिर्फ अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए है, आई विल से, राइट, कि आपको क्या पसंद है पहले खुद को समझो, है ना। जब आप स्कूल लाइफ में आए हो, आपने जेई किया, लगे रहे, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करी, उस समय आई डोंट थिंक सो किसी ने भी अपने बारे में सोचा होगा, राइट। ये समय आपके लिए है, आपकी लाइफ में से बेस्ट समय है ये जो 4 या 5 साल हैं आपके पास, बेस्ट टाइम है अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए कि क्या हो आप क्या कर सकते हो अपने साथ बेटर, है ना। ट्राई सब कुछ करो, ये मेरी एडवाइस है। सब कुछ ट्राई करो, XYZ, ठीक है। और अपने लिए चूज़ करो यार ये अच्छा है, ये बेकार है, या ये नहीं, मुझे नहीं पसंद। बहुत सी चीज़ें ऐसे मुझे नहीं पसंद, ठीक है। बहुत सी चीज़ें ऐसे मुझे ऑकवर्ड है बट बहुत पसंद है कूल। सो ये सबका अपना अपना इंडिविजुअल है। फिर आप अपने आप सेग्रीगेट कर पाओगे कि इतनी देर पढ़ाई के लिए, इतनी देर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए, इतनी देर कोडिंग के लिए। बहुत से लोगों को कोडिंग बहुत पसंद होती है, मुझे भी थी। समय के साथ आप अपना बढ़ाते जाओगे, डीएसए पसंद है, क्या पसंद है, फिर आप जो प्लेसमेंट वाली चीज़ बोल रहे हो वो अपने आप क्लियर होता जाएगा कि यार मुझे ये रोल में जाना है। आप अपने आप इंटरेस्ट डेवलप कर लोगे उसके लिए, है ना। लेकिन उसके लिए सब कुछ आपको पहले एक बार ट्राई करना पड़ेगा। विदाउट ट्राई करें या मेरे कहने से या इनके कहने से आप नहीं पहुंच जाओगे उस प्लेस पे, राइट। सो उसके लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो, एक्सप्लोर करो, स्पेशली इन फर्स्ट सेकेंड ईयर एक्सप्लोर कर लो। कोडिंग वाइज एक्सप्लोर कर लो कि कौन से आपके जो अभी जॉब प्रोफाइल्स हैं उनमें से आपको कौन सा लगता है कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा है। उसको थोड़ा सा देखो, समझो, प्रिपेयर करो कैसे कर सकते हो। जैसे मुझे ओपन सोर्स मुझे अच्छा लगा तो मैंने किया, मैंने वही हमेशा काम किया जो मुझे अच्छा लगा, टू बी ट्रू, कूल, जिसमें मुझे इंटरेस्ट आता गया। तो आप अपना इंटरेस्ट ढूंढो, फिर सक्सेस अपने आप मिल जाएगी उसका। काम फिर काम नहीं लगेगा, काम फिर ऐसा लगेगा अरे यार कोई मस्ती वाली चीज़ कर रहे हैं, करते हैं। ये मेरी एडवाइस रहेगी, हमेशा कुछ ऐसा ढूंढो। और कॉलेज लाइफ इज़ जस्ट फॉर एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोर करो अपने आप को, जानो, टाइम दो चीज़ों को कि आपके हिसाब से वर्क करें। हर बार नहीं करती है, किसी के लिए भी नहीं करती है, राइट। यू हैव टू गिव टाइम, है ना। और ये टाइम बेस्ट है, कॉलेज लाइफ, कॉलेज टाइम मेरे लिए तो बेस्ट रहा है, एंड आई वांट कि अदर्स के लिए भी बेस्ट हो, सबके लिए अच्छा हो। तो सब चीज़ों पे ध्यान दो, थोड़ा थोड़ा दो,
मैनेजमेंट भी यही है कि दिन में थोड़ा बहुत देखो, क्लास में थोड़ा टाइम निकालो खुद के लिए, बाहर जा रहे हो थोड़ा टाइम निकालो, कुछ ऐसा रोज कुछ ऐसा काम करो जिससे आपको अच्छा लगे। जब आप खुद गुड फील करोगे तो अच्छा कर पाओगे, राइट, इन योर लाइफ एज वेल। ओके, सो यस। So this gets us to the end of this interview. Thank you, sir. Thank you, ma'am, for your precious time and informative insights. I think that our viewers would also find it as helpful as I did. And for more such captivating interviews, engage with the Than.